Good morning. Before going to start a new chapter today, that is correlation, let me give you some information. This is OPSC PGT Odia English History Political Science Education Economics Commerce and Zoology, that is at the rate of 2999, and for compulsory papers for validity 6 months this is 1299. Then coming to SSB lecturers in Odia English History Political Science Education and Economics, that is also for 2999. Okay, and always please share the link provided to you so that you will be in a beneficial position. Okay. Now, out of this complete syllabus, we have already completed measures of dispersion up to that, and today we will start correlation and then we will start regression. Now, what is correlation? The relation between two variables is called, if there is any, then it is called correlation. Okay. So, here the relation between two or more related variables is termed as correlation. Two variables means, suppose variable x and variable y are there, whether they are having any relation or not, we can measure it through correlation analysis. Okay. Like if you take the concrete examples, suppose demand and supply, or demand and price, or demand price and supply, like this. Even rainfall and your production of food grains. So, these things also can be related. And what is the degree of correlation, that we can establish through the analysis of correlation. All right. Now, two variables are said to be related when change in the value of one variable causes a change in the value of other variable. If one variable is changing, suppose it is going upwards, then if another variable is going upwards or even downward, then we can say that there is some correlation. It may be positive correlation or negative correlation, we will come to that. For example, there exists some relationship between income and expenditure of a family, or price of a commodity and quantities demanded, or rainfall and production, advertisement expenditure and sales, etc. So, these two variables, as I have told you, are related in some way or the other. So, that we have to establish and we have to measure what is the degree of correlation. Okay. So, measuring the degree of relationship between these variables is done through correlation analysis. After establishing the relationship, we can estimate the value of one variable for a given value of the other variable. This is the derivation. First of all, you have to establish whether there is correlation or not. If there is correlation between the two, what type of correlation is there, whether it is positive correlation or negative correlation, then we can value, suppose for variable x, suppose there is one say 0 to 50 is there, suppose for 35 it is not there, what is the value of y, that we can measure through that correlation degree. Then as such, correlation analysis is very much useful in the field of commerce and economics to estimate the value of cost, sales, profit, etc. If cost is there, then we can establish when the cost is 80, then suppose selling price is 100. Then when cost is suppose 60, what will be the, suppose our cost has been decreased to 60, so what will be the selling price? In this way, we can find out a missing figure, or you can say a desired figure from the figure of another, if there is correlation degree we have already established. Okay. Thus, correlation analysis is a statistical technique to analyze the magnitude and direction. There are two things, magnitude and direction. Direction means positive or negative, and magnitude means actually it will be within plus and minus 1. So, whether it is 0.58 plus or minus 0.332, like this. So, what is the extent of magnitude, that we can determine. So, here first of all direction, then magnitude of two variables.
Okay. So these are the definitions given. Correlation analysis deals with the association between two or more variables. The association between two or more variables. Suppose rainfall and food grain production, or application of manures or fertilizers and food grain production, or like this we can have X and Y. Okay. Simpson and Kafka are giving it this definition. Correlation analysis deals with the association between two or more variables, but it is not very much explained. The association may be positive association, may be negative association, may be more, may be less. Okay. So all these things will be there in the Croxton and Cowden. When the relationship is of a quantitative nature, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in brief formula is known as correlation. Actually, discovering means whether there is correlation or not. Measuring means what is the degree of correlation. These two have been advocated by Croxton and Cowden. Then the next definition is by Ya Lun Chun Chow. Correlation analysis attempt to, actually it should be attempts. Correlation analysis attempts to determine the degree of relationship between two variables, maybe between three variables also. That's why he has written between variables. Okay, after understanding this one, thus correlation is the association between two or more variables, and correlation analysis refers to using the statistical tool to measure the degree and direction of such relationship. Okay. So this is regarding the definitions of correlation. Then significance of correlation. What are the utility? The utility or significance of the study of correlation are: number one, in real life situation, most of the variables show some kind of relationship which is measured by a single figure through correlation analysis. Actually, in real situation, it is very much evident, and we can find out by using the correlation analysis what is the degree of relation. Then second one is when two variables are closely related. When they are closely related, we can estimate the value of one variable for a given value of the other variable. I was giving you that example. Suppose when the cost was 80, if the selling price was 100, when the cost is 35, suppose it is not given to us, we can determine what will be the selling price. Okay. Variable for a given value of the other variable by using the technique of correlation. Analysis. When two variables are closely related, we can estimate the value of one variable for a given value of the other variable by using the technique of correlation or correlation analysis. Then the third significance is that it helps in understanding various economic behavior such as saving and investment. Economic behavior we can study, like saving and investment. If there is no saving, how can investment come? Therefore, saving and investment, as they are related, we can find out what is the degree of correlation between them. Similarly, population and GDP, etc., which are very useful in framing national economic policy. GDP, you know, gross domestic product. Okay, that is our national income. Then correlation analysis removes guesswork. It removes guesswork. You need not guess anything. Directly by applying the formula, you can know what is the actual extent to which the correlation is there. So there no question of guesswork, because in guesswork it may be correct, may not be correct. In most of the cases it will be incorrect. Therefore, in order to avoid that guesswork, we can always take the help of regression analysis. बुझी होची एगुड़ा सबू तुमको मु भावुची इंग्लिश रे कहले तुम जल्दी बुझिबो देन ओडिया रे कहले, किंतु दरकार पड़े तुम मते कहबो मु ओडिया रे कहि देबी. ओके. In nature we find multiple interest related forces. The impact of these forces can be predicted once the coefficient of correlation is worked out. So multiple interrelated forces.
सपोज गोटे धरा जाऊ गोटे लोक को मलेरिया है गोटे एरिया रे बहुत लोक मलेरिया रे पीड़ित होचन तो आम से देखा मलेरिया कौन जो होते गुड़े कारण थाईपे ता भितर मनकर सन्तिसंतिया जगह कि ना बहुत मशार डेनसीटी बहुत बेसी बा लोक मैंने मशारी टाणु ना एमती केते गुड़े कज आम दबा से कज रु कोटा मैक्सिमम होची सेटा आम थ्रू कोरिलेशन एनालिसिस जानी पारी ओके when there are multiple set of causes. So now what are the different types of correlation? Next we will be reading the different types of correlation. So correlation can be classified into three broad categories. These are positive and negative. That means whether there is correlation, but whether it is when x is moving upwards, if y is moving upwards, then it will be positive correlation. If x is moving upwards but y is coming downwards, then it is negative correlation. Similarly, linear and non-linear. If there is a particular ratio which operates between the two variables, ये 10 हेले से 20 हबो ये 20 हेले से 40 हबो मन कर एमती तार डबल रिलेशनशिप अछि तबे सेठी हम कोन करिया ना इट विल बी डबल्ड x आई मीन 2x इज इक्वल टू y तबे सेठी कोनला गोटे रेशियो होला जेतो रेशियो हबो हम जेतो प्लॉट करिबा ग्राफ पेपर रे दैट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस इन दैट स्ट्रेट लाइन दबो ठीक अछि जदी सेटा हला लिनियर जदि सेटा एमती न देकी मनकर गोटे एमती दउची कर्व दउची देन दैट इज नॉन लिनियर लाइन रे थिले लिनियर लाइन रे न रहले नॉन लिनियर देन सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल then we can divide the correlation into simple correlation partial relation or multiple correlation जेतो हम पढिबा सेतरे जाना पड़ी ओके बर्तमान प्रथमे one by one हम पढ़िबा positive and negative correlation केमती होची when two variables move in the same direction it is that means when x increases y also increases or when x decreases y also decreases it is termed as positive okay जेतो x रो वैल्यू कमी कमी जाउची y रो वैल्यू मनकर कमी कमी जाउची बा x रो वैल्यू बढ़ी बढ़ी जाउची y रो वैल्यू भी बढ़ी बढ़ी जाउची तबे सेठी हम ताऊ कहबा देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल गिवन टू यू x is 5 7 10 15 18 20 and y is 2 3 4 6 8 9 जहाँ भी हो ये बढ़ुची ये भी बढ़ुची टुवर्ड द राइट हम देखुचे बढ़ी बढ़ी जाउची it is an increasing trend is there similarly here x is 20 18 15 10 6 it is in the decreasing order and it is also in the decreasing order 9 8 7 5 1 so the direction is towards the down and here it is towards the up similarly when two variables move in the opposite direction when x increases y decreases or when x decreases y increases it is termed as negative for example x 5 रहला 5 10 15 17 20 25 that means it is going on increasing and y is 10 8 7 when x is increasing trend and y is in the decreasing trend we can say that there is correlation but there is negative correlation okay similarly another example here it is given 10 9 8 7 6 5 that means x variable is going on declining कमी कमी जाउची decreasing order रहउची 10 9 8 7 6 5 y 5 7 9 12 15 16 एटा बॉडी बॉडी ट्रेंड रे जाउची this trend is increasing trend and this trend is decreasing trend जेतेबेले दीटा का ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन रे मूव करंती हमर जो कोरिलेशन रा बाहर हो ताको हमें कोन कहबा नेगेटिव कोरिलेशन ओके सो यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड हमें जेते फर्टिलाइजर बेसी दबा हमर प्रोडक्शन टा बढ़िबो so they move in the same direction that's why there is positive correlation between them while price and quantity demanded is negatively correlated demand and price relation तुम जानि थिबो डिमांड जते बळे बढ़िबो प्राइस बढ़ी जिवो बा प्राइस जते बढ़िबो डिमांड टा कमी जिवो
तमे सब अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम जदि आम प्राइस टा को कमे दवा से बेसी डिमांड है जब प्राइस टा बढ़ी जीव डिमांड टा कमी जीव सो दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट्स व्हाई इट इज an example of negatively correlated. Okay, next time jiba if the value of x and y are plotted on a graph paper, the graph line moves from left to right upward in case of positive correlation. In case of positive correlation it is empty daba from left to right it will go on increasing. So this is called positive correlation. हमें एपटे ओ एक्स एक्सिस एपटे ओ वाई एक्सिस नबा तो प्लॉट करबा प्लॉट रे मन करे एमतिया गोटे आसला एमति गोइंग ऑन इंक्रीजिंग टुवर्ड द राइट तबे कोन हबा एटा दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन ता तार अपोजिट हबो जेमति कि एटा एपटे आसीबो. सो दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन. So when plotted on a graph paper they will give lines like this. If it goes on increasing towards the right from left, then it is positive correlation. If it is giving from the top to the bottom, from top left to the bottom right, it is coming, then it will be called negative correlation. Okay. Linear and non-linear or curvilinear correlation. When variations in the values of the two variable bears a constant ratio, the correlation referred to is termed as linear correlation. मु तुमको बुझौथिली जेतेबेले एटा 10 थिला एटा 20 थिला जेतेबेले एटा 15 थिला एटा 30 थिला जेतेबेले 20 थिला एटा 40 थिला that means double 2 times of x is equal to y होता. That means there is a ratio between x and y. 2x is equal to 1y. That is 2:1. That is the ratio. Okay. तो से रेशियो जेतेबेले हेबो सेटा होची गोटे लिनियर कोरिलेशन अछि ताको हम कहबा लिनियर. जेतेबेले सेटा किसी सेमती रिलेशन नाही मन करे एटा 10 बेले एटा अछि 7 एटा 20 बेले एटा हला 17 एटा 30 बेले एटा हला मन करे 18 एमते होची इंक्रीजिंग होची किंतु लाइन रे जाउनी गोटे करेक्ट स्ट्रेट लाइन रे जाउनी. तबे सेटा को हम कोन कहबा बिकॉज़ देयर इज नो रेशियो इन्वॉल्वड इन दिस टू x and y variable. That's why it is called non-linear or curvilinear correlation. When plotted on a graph paper, we get a straight line in case of linear. For example, x is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7 and y is equal to 10, 15, 20, 25, 30, 35. Here the ratio is 1:5. I am going to tiyari kariba ethre. Suppose एटा हला ओ एक्स एक्सिस हमें नौचे एरंग ओ एक्स एक्सिस 2 3 4 5 6 7 सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 हमें एमती ग्राफ पेपर रे नहीं गले तापरे एपटटा होची 10 15 20 10, 15, 20, 25, 30, 35 मन कर एमती अछि. तो जेतेबेले एटा 2 रहउची एटा रहउची 10 त माने एटा हला बिंदु जेबेले 3 रहउची एटा अछि 15 एजा 10 ना एटा 15 हवा 10 15 अछि. This point is 15. Similarly 4 थिला बेले 20 होची. 5 थिला 25 होची. सिक्स थिला बेले इठ रहउची
7 थिला बेले तापरे ए जगहटा तुम देखिबो आम जो गोटे लाइन रे जोड़ीबा बिकॉज देयर इज ए लिनियर दिस शुड बी स्ट्रेट एक्चुअली एटा टिके बोध मोर बेसी हो जाइछि जा फल कि एटा को स्ट्रेट कर दे करी एटिके नहीं आस पारे जाओ ए जगह सो आम फ्री हैंड रे करछे बोली एमती टिके लंबा रहउछि बट अदरवाइज इट शुड बी स्ट्रेट सो इट इज ए लिनियर कोरिलेशन ओके एटा हमरा हे गला तापर आमे जिबा एटी देखा एटा लिनियर माने जदी दीटा अलग अलग रहउछि ता मझीटा को आमे नउछि लाइन ऑफ द बेस्ट फिट नै गले सेटा लिनियर हे जाउछि सिमिलरली एटा होउनी तेनु एटा को आमे ता कहउछि कर्विलिनियर और पॉजिटिव नॉन लिनियर दिस इज पॉजिटिव लिनियर पॉजिटिव काई होउछि ना लेफ्ट टू राइट को हाइट को जाउछि इट इज गोइंग अपवर्ड्स टू द राइट but when it will come down like this from left to right it is called negative and because it is going in a straight line it will be called negative linear or linear but negative. Similarly here it will be curved or non-linear or curvilinear and negative because it is going toward from the left toward the right it is coming downward so it will be negative non-linear. फर्स्ट ऑफ ऑल आमे जानिबा लिनियर कोटा नॉन लिनियर कोटा जदी लिनियर होउची तबे सेटा पॉजिटिव लिनियर कि नेगेटिव लिनियर जदी लिनियर न होउची कर्विलियर होउची सेटा नेगेटिव कि पॉजिटिव नेगेटिव होबो केमती जते बेले लेफ्ट टू राइट को तळु को आसी डाउनवर्ड्स आ जते बेले लेफ्ट टू राइट को जिबो अपवर्ड्स दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओके सो दिस इज पॉजिटिव लिनियर this is positive non-linear this is negative linear this is negative non-linear एतक बुझियला तापरे next time jiba before going to anything else please read out these things helpline number is 8093073340 and 8093073341 so this is you can talk to the office from 10 AM to 7 PM within the office hours and if you have got any feedback or complaint or suggestion you can always give it to the office. If you want to use the WhatsApp number 8093073342 this is only WhatsApp number only WhatsApp message you can send and if you like so mail ID is given to you that is widyakarclasses@gmail.com okay. Now simple partial and multiple correlation. So first of all we have already understood what is positive correlation and negative correlation. Next one whether it is linear or curvilinear or linear and non-linear we have already understood. Then we will come to simple partial and multiple correlation. What is simple correlation, what is multiple correlation, what is partial correlation. Okay, simple correlation first of all. When the relationship is studied between two variables only two variables that means suppose demand and price only two variables are there we are studying the correlation between demand and price then it is called simple correlation okay. It is a case of simple correlation. Example, study relationship between saving and investment or demand and supply or demand and price like this. Two variables. Then multiple correlation. In multiple correlation, relationship among three or more variables is studied at a time. For example, when the joint effect of fertilizer and rainfall both are responsible for good agricultural production. So when we are taking three variables and they are related or not we are going to establish and the degree of correlation also that will become multiple correlation. So three or more variables when are involved in the study of correlation analysis we can call it multiple. Then we will come to partial correlation.
when the relations between two variables is studied, keeping the other influencing variable constant, it is termed as partial correlation. We can take an example. In the above example, study of the effect of fertilizer on agricultural production keeping rainfall as constant is termed as partial correlation. Let me explain it a little bit better. See, suppose we are taking into consideration three variables at a time, that is rainfall, fertilizer and food production or agriculture. ठीक है, आम से करुचे आम कौन करिया, रेनफॉल टा मनकर सबुटी 100 सेंटीमीटर रोची इन ईच केस. तापर फर्टिलाइजर जिते बड़े आम 5 kg दौचे प्रोडक्शन होची मनकर 50, 10 kg दौचे प्रोडक्शन है 37, 15 kg दौचे एटा हला मनकर 50. तमने इंक्रीज करूची फर्टिलाइजर रे विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द रेनफॉल. रेनफॉल टा कांस्टेंट आम रखी देचे. सिमिलरली यदि रेनफॉल टा को नबा गोटे पर्टिकुलर केजी मनकर 10 kg ऑफ फर्टिलाइजर दबा, सेटा सब 10 kg रहिबो, सेटा जो कांस्टेंट रहिबो थर्ड फिगर टा, किंतु आउ दीटा भितर आम नबा तापर रिजल्ट बाहर करबा, सेटा है पार्शियल कोरिलेशन. से पार्शियल कोरिलेशन काहे ताऊ कहउची ना, जदिओ दीटा कर इफेक्ट अछि, दीटा कॉज रो इफेक्ट अछि, ए जो इफेक्ट आम नौचे किंतु आम गोटा को कांस्टेंट रखिकरी अन्यटार इफेक्ट क्लियरली सेपरेटली, और यू कैन से we are making isolate only about the correlation of two things. जोड़िया जिनस को आम नौचे आ गोटे जिनस को कांस्टेंट करी छाड़ी दौचे, किंतु तार इन्फ्लुएंस अच्छी आम किंतु ताको नौने, तार इंक्रीज बा डिक्रीज टा नौने तार वेरिएबल टा, सेति पई ताको कहंती पार्शियल, बिकॉज दैट विल बी ओनली पार्शियली ट्रू. आरटा जो आसीज रेनफॉल टा पुणी नवा पुणी चेंज हम, से कहते पार्शियल कोरिलेशन. देन मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन. देयर आर 4 मेथड्स टू स्टडी कोरिलेशन. वन इज स्कैटर डायग्राम मेथड, तापर हला ग्राफिक मेथड, तापर हला कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 2 3 4 5, तापर रैंक कोरिलेशन एंड कनकरेंट डेविएशन मेथड. एथरु हमर इंपोर्टेंट हो ये चारिटा आग स्कैटर, हाँ कार्ल पियर्सन पर्यंत आग पढ़िबा, तापर देख. ओके, ना स्कैटर डायग्राम मेथड, डॉट डायग्राम तमाने एठी कोन हबो, गोटे ग्राफ पेपर नबा, ग्राफ पेपर नै सारी की तापर कोन करबा, से जो एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल एलंग ओ एक्स एक्सिस आम एक्स वेरिएबल नबा, एलंग ओ वाई एक्सिस आम वाई वेरिएबल नबा. यूजुअली ओ एक्स वेरिएबल रे हमर रहबो कोन टाइम फैक्टर. सपोज 2010 2015 2020 2025 लाइक दिस आम ईयर गुडा नबा बा टाइम टा नबा. एपटर नबा आम कोन वेरिएबल टा प्रोडक्शन केते हेतिला बा प्रॉफिट केते हेतिला 2010 रे 15 रे 20 रे 25 रे केते प्रॉफिट हेतिला, एटा आम नउचे एलंग ओ वाई एक्सिस. सेतिबे आमे ताको कोन करबा, दीटा एक्सिस रे नै कि ताको प्लॉट करबा ग्राफ रे. तापर से डॉट जो दबा, से डॉट रो टेंडेंसी नै गिरी तार बेस्ट फिट लाइन ऑफ बेस्ट फिट गोटे बाहर करके ता मझी रे नबा, सेटा हला तमरा कोरिलेशन लाइन. ओके, आमे देखिबा सेटा रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स क्विकली. अंडर दिस मेथड टेक द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल दैट इज एक्स वेरिएबल इन एक्स एक्सिस एंड रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल वाई इन वाई एक्सिस. तो हम एक्सप्लेन कली जो जिनसटा सेटा इन ए ग्राफ पेपर. For each pair of x and y, a dot, and in the process we get a number of dots which is equal to the number of paired observation. Then by looking at the dots we get an idea about the degree and direction of correlation. एटा केमती हिची देखो. If the dots are closer, correlation will be greater. जितेबाला dots रा closer रहबो, correlation will be greater. Conversely, if the dots are wider, बहुत छाड़ी छाड़ी रहिची, then the degree of correlation will be less. Again, if the dotted points fall as a straight line rising from the lower left and corner to the upper right hand corner,
the correlation is perfectly positive. That is R कहते coefficient of correlation को R represents coefficient of correlation. R is equal to +1. Perfectly positive, perfectly negative हेले ताको आमे कहया -1 जेतेबेले कि राइट हैंड साइड रु तळु को आसीबो एवं स्ट्रेट लाइन रे थिबो. आमे सेटा ऑलरेडी करिथिली मु तथापि आमे आउरी प्रॉब्लम नै कि करिवा. Fall in a narrow band, it implies a high degree of correlation. Narrow band माने मन करा आमे एमती ग्राफ टा पाउछ. एटा हला OX, एटा हला OY. आमे ताको डॉट उडा फिक्स करूचे. सपोज एमती हमको डॉट उडा मिलुची. तेबे आमे कोन कहबा एटा होची परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन हे गला. ठीक अछि. एटा नैरो हैला माने कोरिलेशन बेसी हैला. कोरिलेशन विल बी मोर. जदि एटा एमती न होई कि एमती हे थांदा. सपोज लाइन टा इथरे जीवो किंतु एटा बहुत डिस्टेंस आसे होची. तेबे एठी कहला लेस हैला. कोरिलेशन इज लेस. इट इज मोर. कोरिलेशन इज मोर. यदि क्लोज नैरो लाइन रे अछि एठी से कहूची यदि नैरो बैंड रे रहती then it is correlation becomes evident. Right and from left to right positive correlation. If the dots fall from left to right माने एपटू जदि आसीबो हम जेमति करथले that will be called it is negative correlation. अच्छा तापर नेक्स्ट पॉइंट हला widely scattered if the dots are widely scattered तुमति कहिले जे बेसी scattered हे गला degree of correlation will be less. हम less बोल लिखिचे एठी lie on a straight line parallel to x axis यदि एमती रहइबो o x axis o y axis मनकर एमती गोटे लाइन आसे हमरा. So there is no correlation to x axis or the dots are positioned in a haphazard manner. एमती आसीबो बा एमती आसीबो एमती haphazard आसीबो. तबे ए दीटा केस रे there is no correlation. Alright, इथरे correlation नाही बोली हमें धरनबा. तापरे एट देखो R is equal to +1 कहेंगे ना तारा it is giving a straight line and moving towards the right, upwards to the right. It is moving upwards to the right. So this is the line perfectly positive or R is equal to +1. Actually R will be in +1 and -1. ताठू बेसी हेले wrong, ताठू कम हेले प्लस माने -1 रु जदि कम हे गला कोनोसी जगह रे हमर आंसर त भूल अछि. गुड. It will be maximum +1 and minimum -1. Similarly it is the left to right को जाउची और डाउन को जाउची तबे एटा परफेक्टली नेगेटिव बा ताको हम कहबा R is equal to -1. Okay. Then एटा जदि पाखा पाखी जाउची एटा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. यदि सेमति आसीबो एपटू किंतु से पाखा पाखी थिवा हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन हबो. ए जेमति अछि एटा हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव को बट हाई डिग्री कारण बहुत क्लोज अछि. यदि छाड़ी छाड़ी बेसी रहिबो एटा लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. यदि छाड़ी छाड़ी रहबो किंतु एपट रु जीवो तबे सेटा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव को एंड एथिरे होचे नो कोरिलेशन कारण कोठी का साथ संपर्क नाही तबे सेटा हला नो कोरिलेशन बा पैरेलल लाइन जाइथिले भी नो कोरिलेशन. एग्जांपल देला उटे from the following particulars draw a scatter diagram and interpret the result. Thus there exists a high degree of positive correlation between x. किमती होची देखो 0 to 30 40 50 60 70 देला तापरे एटा एपटे देला 10 20 30 40. तो जतबेले से प्लॉट करिछि ए जगह रे मनकर प्लॉट कले तापर लाइन टा एटा आसला ता माने एटा हला कोन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और +1. R is equal to +1. Okay. Then what is the advantages of this scatter diagram method? Scatter diagram माने जोठी सेठी ताको प्लॉट कले सेटा हला scatter diagram. Okay. Scatter diagram टा
This method is simple and can be understood easily. It has prathama advantage. Tapare it gives us a rough idea quickly about the relations between two variables and has a memorizing effect. It is not influenced by the size of the extreme items. Then we can find out the value of the dependent variable for a given value of independent variable. एटा जतबे आमे गोटे ग्राफ पाउचे मन करे एमती ग्राफटा हेची बा एठी होची एटा जतबे एथि होची एटा एठी होची एटा एठी होची एटा एठी होची एमती जतबे आमे करूचे x and y रो नै से रिलेशन टा से एस्टैब्लिश करूची. We can find out the value of the dependent variable for a given value of the independent variable. जो variable x and y नै जदि x टा हला independent variable y टा हला dependent variable x रो गोटे जिंस ना माने y रे गोटे जिंस नाही किंतु x रे अछि तबे तार वैल्यू टा बाहरी करि परिबा एथरे scatter diagram method. तापर असला what are the disadvantages of scatter diagram method? This method is not suitable when the number of items are large. Number of items large हेले एटा हेई परिबो कारण सेरे कोठी कोठे प्लॉट हबस कि जणा पड़ी. We may get a rough idea about the relationship, but the exact degree you cannot find out. Of correlation cannot be worked out. Exact degree ta hei pariboni. Tapare its further use is restricted in the absence of mathematical formula. Mathematical formula jehetu ethre use houni kichi, it will not help us in the further analysis. Okay. Then graphical method. First है हमारा scatter diagram method, second method है graphical method. In the graphical method, in this method, the value of the common reference, that is time, place, etc., are taken in x-axis, and while the variable x and y are shown along OY axis, while the variables of y are along the y-axis. For each variable, we get a graph line. If there are two variables, we get two graph lines. Then the closeness and movement, it is dita graph line haba empty. मनकर गोटे empty देला, आ गोटे empty देला. ता माने dita correlation है. Because they give almost close line. Then the closeness and movement of the graph को direction रे जाउचंती are examined to find out the degree and direction of relations. तो एमती दीटा आसीबो. एटा होची ग्राफिकल मेथड रे. सेथरे कोन होतला गोटिए लाइन आमे टाणुथिले स्कैटर डायग्राम रु, किंतु एथरे आमे कोन करिवा न जेतेटा वेरिएबल सेतेटा लाइन आसी. आ जदि लाइन बडा क्लोजर अछंती दीटा जदि क्लोजर अछंती तबे एटा होची हमरा माने हाई डिग्री ऑफ correlation is existing. If the graph lines are closer, it indicates higher degree of closure thile, higher degree of correlation. Further, if the graph lines move in the same direction, either increasing or decreasing, it shows that the given variables are positively correlated if they move in the same direction. On the other hand, if the graph lines of the variables move in opposite direction, गोटे एमती जाउची आ गोटे एमती जाउची, तबे सेठी कोन हला अपोजिट डायरेक्शन गला, तबे नेगेटिव कोरिलेशन. देन एक्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. इफ द ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट और शो इराटिक मूवमेंट, यदि एमती थिबो गोटे लाइन एमती जाउची गोटे लाइन एमती जाउची, इंटरसेक्शन हे गला, तबे देयर इज नो very low degree of correlation or there is no correlation. तामने एटा हेई पारे r is equal to suppose plus 0.009 मन कर अछि, बहुत कमी गला, बा r is equal to minus 0.001 एमती अछि, नेगेटिव हे गला. एई सब जगह रे एमती आसीबो, इंटरसेक्ट हेला आसिया कथा न. तापर आसी एग्जांपल, स्टडी द कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा by applying graphic method. Here dela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
तापरे एवरेज इनकम 30 33 35 37 42 44 45 47 48 50 and average expenditure 25 27 28 30 40 41 42 44 46 48 ता माने एठी कोन होउची पॉजिटिव कोरिलेशन निश्चय आसीबो बिकॉज़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन बोथ x and y सपोज दिस इज x and दिस इज y ये 30 33 धीरे धीरे बढ़ुची ये धीरे धीरे भी बढ़ुची तो एटा पॉजिटिव कोरिलेशन सॉल्यूशन हला सिंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर ग्राफ मूव इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाउची अपवर्ड then there is positive correlation between these two. Further, as the two graphs are closer, the degree of correlation is high. केमते होची से देखिए एटी देखेला एटा ला year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तापरे वेरिएबल x और वेरिएबल y को नेकरी से आगे वेरिएबल x को नेकी करी वेरिएबल x टा हैला इनकम टा कोन होची केते केते इनकम हला 30 33 35 देखो एटी हला 30 33 35 एमती सबुड़ा दे देला तापर तुम गोटे लाइन ताको टाणल जोग कल सब पॉइंट गुड़ा को जोग कला पर तुम एटा पाइल दिस इज इनकम दिस इज x वेरिएबल देन दिस इज एक्सपेंडिचर y वेरिएबल सिमिलरली यू कैन प्लॉट इट लाइक 25 27 28 एमती हिची तो से नेला 25 एठु नेला 25 एम नेला ये प्राय समान रे जाउची तेनु याको हमें कहबा पॉजिटिवली कोरिलेटेड आउ बहुत क्लोज अछि एतिका हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड आर सिमिलर टू दैट ऑफ द स्कैटर डायग्राम मेथड सेटरे जो सुविधा असुविधा थला एथरे भी अछि नाउ विल कम टू द मैथमेटिकल मेथड दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन it is a mathematical method of measuring correlation which is named after the British biometrician Professor Carl Pierce. It gives us a numerical value of the correlation from which we can judge the degree and direction of relationship between two variables. हमको डिग्री भी दबो आउ डायरेक्शन भी दबो डायरेक्शन हेले पॉजिटिव बा नेगेटिव हबो और डिग्री हेले कोन हबो हाई और लो कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव हाई लो ये कोरिलेशन हमको दबो ये दबो ना गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू आसीबो r is equal to plus 0.79 मन कर दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू तमने भलो कोरिलेशन अच्छी x और y भितर पॉजिटिव कोरिलेशन यदि r इज इक्वल टू आम बाहर करिया कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ताको हमें कहउचे r इज इक्वल टू सपोज -0.21 तमने लेस नेगेटिव कोरिलेशन अच्छी इथरो हम जानिबा व्हाट आर द assumptions because it is a mathematical device it must have been established on a set of assumptions. So what are the assumptions? Assumption हला प्रथमे there exists a linear relationship between the variable x and y. एटा linear नथिले एटा बाहरिबनी linear relationship थिबा दरकार. The population from which sample data are drawn resembles a normal distribution. ए जो population टा हम नबा it should be a normal distribution. Normal distribution तो मु कहितली मने थिबो एमता डिस्ट्रीब्यूशन टा थिबो माने दैट इज नॉर्मल पॉपुलेशन टा थिबो तापरे द वेरिएबल्स अंडर स्टडी आर अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ कॉजेस नॉट ओनली वन कॉज बट देयर मस्ट बी ए नंबर ऑफ कॉजेस मल्टीपल कॉजेस मस्ट बी देयर ओके देन देयर एग्जिस्ट ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नथिले हबनी cause and effect relationship between two variables x and y then the probability of error that is sampling cannot be ruled out there may be some sampling fluctuation that be asi pare tapre hela features what are the features of this correlation Carl Pearson's coefficient of correlation the correlation coefficient is a pure number independent of the unit of measurement eta unit re kara jai paribon independent of the unit
प्लस माइनस +1 -1 भितर रहिबो न्यूमेरिकल वैल्यू ओके तापर द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट varies between -1 and +1 मैक्सिमम हबो +1 और मिनिमम हबो -1 ता भितर जो संख्या रहइबो मस्ट बी लाइक 0.9 और -0.8 और -0.1 एमती किछि गोटे थिबो +1 1 पॉइंट किछि आसीबो नाही 1 रु अधिक आसीबो नाही 1 रु कम भी आसीबो ठीक अछि तो आमे सबले देखिबा तार भितर यार एई भलिया एग्जांपल आसीबो the closer the value of r either to +1 or -1 the stronger is the relationship between x and y जदि +1 रो एकदम क्लोज थिबो पाखा पाखी थिबो पॉजिटिवली कोरिलेटेड जदि -1 रो पाखा पाखी थिबो तबे नेगेटिवली कोरिलेटेड इन बिटवीन रे 0.5 आडे आसीबो प्लस हो माइनस हो सेटा डिस्टेंट टिके the sign of the coefficient correlation indicates the direction of relationship sign माने प्लस हेले पॉजिटिव and minus हेले नेगेटिव एटा से कहै डायरेक्शन एंड साइन एटा हला साइन direction of relations a positive sign indicates that both the variables are either increasing or decreasing they move in the same direction on the other hand a negative sign states that when one variable increases the other variable decreases or when the other value decreases another value increases then जदि नेगेटिव है तापर हला the magnitude of the coefficient of correlation indicates the strength of relationship is plus 0.9 हला एटा एक्सटेंड हे गला बा प्लस 0.1 अछि एटा बहुत कम अछि पॉजिटिवली रिलेटेड बट कम एटा पॉजिटिवली रिलेटेड एंड टू द नियरिंग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हेले +1 आउ -1 परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हेले r is equal to okay degree of correlation जदि +1 बा -1 हबो नेगेटिव तबे एटा परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हला 0.7 टू +1 हेले एटा हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन हला पॉजिटिव हेले पॉजिटिव नेगेटिव हेले नेगेटिव 0.3 टू 0.7 मॉडरेट मझी मझिया तापर 0 टू 0.3 हेले लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन लास्ट हेला एटा 0 हेले नो कोरिलेशन there is no correlation the value of the correlation is equal to 0 r is equal to 0 that means there is no correlation then different methods of calculating Karl-Pearson's coefficient of correlation Karl-Pearson's coefficient of correlation can be studied under direct method actual mean method and assumed mean method okay so in three methods we can work out the problems on coefficient of correlation कौन केमती सेटा होउची देखिबा this method is direct method असला this method is applicable where the size of the values of x and y are small यदि साइज टा बहुत बड़ हे जी एटा करी हबन डिफिकल्ट हब सेति बेगा से कहूची दैट इज द लिमिटेशन एही अनुसार हम करबा सो हियर द फार्मूला इज r is equal to n summation xy minus summation x into summation y divided by n summation x square minus summation x whole square into n summation y square minus summation y whole square it is the notation उडा बहुत important से notation टा मन रखिया पड़ियो r is equal to coefficient of correlation n is equal to number of paired observations जितना पेयर थिबो गोटे गोटे पेयर पे एक नंबर है एमती आसले मनरा 8 पेयर्स अछि तबे n will be 8 तापरे x हला गिवन वैल्यू ऑफ x वेरिएबल x रे डिफरेंट एक्चुअल वैल्यू उडा दिया हिथिबो 5 7 8 9 10 एम दिया हिची दैट इज x सिमिलरली y रे वेरिएबल 3 4 2 5 6 एम दिया हिची दैट विल बी y ओके देन हमें x स्क्वायर भी करूचे हमें कौन करिवा x स्क्वायर करिवा आगे x करिवा तापर x स्क्वायर y करिवा y स्क्वायर तापरे xy एतेउडा हमें करिवा एवं तापरे एटी देखो समेशन x रो होल स्क्वायर यार समेशन बाहरिवो एटी समेशन x स्क्वायर अछि x स्क्वायर रो समेशन बाहरिवो y रो भी सेमती
समेसन y अछि समेसन बाहरिबो y स्क्वायर समेसन बाहरिबो y स्क्वायर अछि एठी तापरे xy समेसन xy एठी अछि यार भी समेसन बाहरिबो सबुडार सेति समेसन बाहर करिया पड़िबो n समेसन xy n into समेसन xy में नबा समेसन xy बाहरिबो केमते एठू बाहरिबो ओके एठी तो समेसन x into समेसन y अछि बर्तन एतिके जानि छला परे वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला so before going further let me tell you some other information. If you purchase 6 packs at a time, that will be called Brahmastra power pack and 6,999 rupees will be the cost. Similarly, if you want to purchase only 3, then that is called Trishakti power pack, 3,999. And these are the courses which we have already known, that is OPSC PGT, compulsory Odia, English, history, others, SSB, TGT, LTR, RST, OSS, TET, Arts, PCM, CBZ, Hindi, LTR, RSD, Prelim. Then OTET, paper 1, all subjects, paper 2, social studies, paper 2 or paper 3, mathematics and science. Then here SSB lectures, Odia, English education and others, OSSC, 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 OPRB, CGL, RI, ARI, Assistant RI, Amin, SFS, SI Police, BED, Art Stream, Science Stream, JA and PU entrance exam, JTS, primary classes 1 to 5, upper primary arts, upper primary science. All these things, out of these only 3 things means you will be purchasing it for 3,999. If you take Brahmastra power pack, there will be 6 courses, any 6 courses you choose, 6,999. Now we will come to the example where we are going to find out the value of R, coefficient of correlation given by Karl Pearson. Karl Pearson's coefficient of correlation. Okay. Here x and y values are given 2, 3, 4, 5, 6. This is 9, 6, 5, 3, 2. Okay. Calculation of Karl Pearson's coefficient of correlation. See 2, 3, 4, 5, 6 x variable and 9, 6, 5, 3, 2. 2, 3, 6, 4, 5, 6 that is x variable and y variable, these are given to us. Okay, 9, 6, 5, 3, 2 and you have to find out R. R is एति होची क्वेश्चन तापर आमे वर्किंग्स करिवा कोन वर्किंग्स करिवा आगे x हमको देछि x रो टोटल नै नबा समेशन x is equal to 20 and n is equal to 1 2 3 4 5 pairs means n will be 5. Then you take summation x 3 2 5 4 9 5 14 20 हे गेला तापर x स्क्वायर बाहर कर 2 रो 4 3 रो 9 4 रो 16 5 रो 25 6 रो 36 ताकू ऐड करले हमर समेशन x स्क्वायर हे गेला 90. सिमिलरली y रो टोटल करिवा 9 6 15 5 20 3 23 2 25 समेशन y is equal to 25 and summation y square ता बाहर 9 रो 81 6 36 5 रो 25 3 9 2 रो 4 सब ऐड करले बाहर लगते 158 9 4 13 15 18 24 25 2 8 10 3 13 2 15 155 तापरे xy x को आ y को मल्टीप्लाई करिया 2 9 18 3 6 18 then 4 16 24 5 sorry 4 5 20 5 3 15 6 2 12 like this we are finding out the xy हरे xy बाहर कर देला परे हमें ऐड कर दबा समेशन xy पाया पे 8 8 16 5 21 23 2 1 3 4 2 6 1 7 8 83 तमे सबुडा पाई गेलो कोन पाई गेलो समेशन x पाई गेलो समेशन x स्क्वायर पाई गेलो समेशन y पाई गेलो समेशन y स्क्वायर पाई गेलो समेशन xy पाई गेलो आ n भी पाई गेलो ए सब परे हमें टू पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर फार्मूला पुट करो फार्मूला ला r इज इक्वल टू n समेशन xy माने एटा वैल्यू उडा minus summation x into summation y divided by root over of whole root of n summation x square minus summation x whole square into n summation y square minus summation y whole square. So here n is equal to 5 we have already calculated. Then n summation xy, see n summation n to 5 summation x is equal to 83, so we are taking 83.
83. Then summation x into summation y. Summation x thila 20, summation y thila 25. Then root over n summation x square 5. Eta bodhe summation x square thila 90, summation y square hochi 155. So 90 he gala, eta 155 he gala, हम जान देले. तापरे summation x ra whole square eta. Summation x whole square. Summation x amar thila 20. 20 and 25, 20 ro whole square, it is 25 ro whole square. So we have verified all the items or all the notations which we are giving, that their values we have substituted. Then we कौन करिवा याकू solve करिवा. 5 3 15 1 5 8 40 1 40 415, 20 into 25 500, correct? Divided by 90 into 5 450 and 20 रो square 400 into एटा गोटे थरा कर देले एमती लंबे देले भी हबो, किंतु into हबो एटा into हैला कण 775, किंतु 5 into 155 is equal to 775 and 25 square is equal to 625. Now we will be getting 415 minus 500 is equal to minus 85. एटा तलटा हैला root over 50 और एटा हैला root over 150. तापरे 85 को 85 रहला 50 रो रूट ओवर बाहर करिवो 150 रो रूट ओवर बाहर करिवो ताको मल्टीप्लाई करिवो, दैट विल बी 86.6 रूट ओवर पूरा बाहर कर देले. सो minus 85 divided by 86.6 will be giving you minus 0.98. ताला हमर इंटरप्रिटेशन कोन हबो, एटा नेगेटिव हबो, दैट इज द डायरेक्शन. एंड नेगेटिव परे परे आ गोटे जिनिस हम जानिया पड़ियो, एक्सटेंट हला 0.98. 0.98 माने बहुत बेसी. That means it is highly, the R or the coefficient of correlation is highly negative. Okay, that is 0.8. So this is given. Thus, there exists a high degree of negative correlation between x and y variable. All right. So this is the first method, and the second, when deviation is taken from actual mean etc., the second method onwards we will take in the next class. Thank you.